Hare Krishna, Ashi. How are you? Hare Krishna Chanda, I'm fine. How are you? I'm good, thank you. So it's been long time that I caught you today, and today Yes. we are grateful to you for sharing your journey with us on our show Infinite Inspiration. And I would like you to speak about yourself. आप कहाँ हो, कहाँ से हो, और अब आप क्या कर रहे हैं? Okay. So my name is Ashi और मैं originally तो बॉम्बे से हूँ, इंडिया से और in 2006 I came here to China. I got married and I came here. So my journey in Bombay has also been quite how do I say, पहले जमाने में कहते थे कि आपको jack of all trades master of none जैसे अच्छा नहीं होता है, but I was one of that. मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीजें ट्राई की थी, बहुत सारे अलग जॉब्स लिए थे. My dad had encouraged me a lot to have a strong career before I get married. And while I was doing that, I learned a lot. I mean, he really pushed me. He was a man behind my career, and he really pushed me to give my best. अगर और at the same time he said money is important, लेकिन उससे पहले आपको अपने स्किल्स डेवलप करने हैं. तो मैं छोटी थी तभी से ही यूज्ड टू लाइक अगर हम किसी होटल में गए तो ही वुड टेल मी गो एंड आस्क, आप रूम के टैरिफ पूछ लो. तब उस वक्त समझ में नहीं आता था, बट बेसिकली ही वाज ग्रेजुअली बिल्डिंग माय स्पीकिंग स्किल्स, माय कॉन्फिडेंस. एंड मैं इंटरव्यूज के लिए जाती थी इवन अगर जॉब पे हूँ. सो यूज्ड टू स्टिल टेल मी कि अगर आप कंफर्टेबल हो जॉब में तो भी आप इंटरव्यूज के लिए जाओ, यू सी डिफरेंट ऑफिसेज, you'll have a different outlook about work. मुझे जितनी पगार मिलती थी बहुत ही बेसिक, मेरे ख्याल से आई स्टार्टेड विद जस्ट 2500 रुपी. एंड ही केप्ट अ ड्राइवर फॉर मी हु यूज्ड टू गेट 3000, बट ही Wow. वांटेड कि मैं ड्राइविंग सीख जाऊं अच्छी तरह से. So I felt he really pushed me a lot, and I did different things at that time. And from there, I mean, of course, mom was responsible for all the values I've had. My sister was the best friend I could ever have. So I think that family, and of course cousins, everyone around me, I guess I've been very fortunate to have a very strong family value, and the love and respect that saw them giving it to their elders, वही मैंने सीखा, and I tried to do that. 2006 I got married, I came here. And then again, कहते हैं ना कि behind every successful man there is a woman, but I feel behind my success there are two men, and that's my dad and my husband. शादी के बाद I didn't know if I would ever be able to do so much, but my husband has always supported my work, and he taught me to have financial goals in life. मैंने शादी के बाद MBA किया, तो balancing everything was very easy because I had him, I had his support. यहाँ पे I work as a teacher in an international IB school. I'm teaching in kindergarten. So, yeah, I think the journey has been, if I look back, it's more about learning and growing in each every year and evolving as a better person. Yeah, because I remember when we were kids, हम लोग बहुत shy थे. We were not so हाँ. smart as kids are now, right? We didn't know what to speak. I mean, ठीक है, Right. बेसिक पता था, लेकिन ये जो आजकल knowledgeable talks है वो हमको नहीं पता थे. Although we हमारे were टाइम पे वो pushed. Yeah. ट्रू, ट्रू, वेरी So ट्रू. हमारे टाइम how? पे इतना एक्सपोजर भी नहीं था. Right. We didn't have any phones. I think we only had the landline. मेरे घर पे तो landline भी नहीं था. So we've come from having nothing to getting a lot, right? We've also actually seen the gradual growth steps towards life. So when you were in Bombay, because Bombay is a very fast-paced city, right? So have you had the local train, ka dhaka mukhi and all that stuff? बहुत या इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार और समथिंग, देन माय पेरेंट्स वर लाइक नहीं, तुम्हें लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना तो सीखना ही. ऑफ कोर्स दे वर स्कैर्ड कि ठीक से पहुंची कि नहीं पहुंची, या बट बहुत जरूरी था. तो आई यूज्ड टू गो वेरी फार, मतलब एक एक घंटा दूर. बॉम्बे सेंट्रल से मलाड गई हूँ इंटरव्यूज के लिए, या डिफरेंट प्लेसेस. बट येस, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. माय कॉलेज वाज इन चर्च गेट, सो आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन, कम एंड बैक, कम गो एंड होम. मैं छोटी थी तभी भी आई रिमेम्बर माय स्कूल वाज, वी हैड शिफ्टेड आवर हाउस, एंड आई हैड टू ट्रैवल बाय बस. मैं
बिकॉज माई हाइट वॉज शॉर्ट एंड इतनी छोटी सी लगती थी, तो कितना 25 पैसा लेते थे कई बार, तो ड्राइवर ऐसी कि बच्चा समझ के देते भी नहीं थे. बट इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू लर्न ट्रैवलिंग बाय बस, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. You never know what kind of days you see. So everything in life you have to learn. So finally, you were driving in Bombay also? Were you Sorry? driving in Bombay? Saying were you driving in Bombay? Yes, yes, yes. I started driving in Bombay, so that's where of course, my parents really encouraged me, and then they kept a driver for me even if I was going to college or work, and then he used to sit beside me on my drive karti thi, so it was quite good. My mom used to assist me sometimes कि यहाँ लेके चल, वहाँ लेके चल, डरो मत. So I think that was Your mom where is a star. Your mom has been a star of the I, family. ऐसा कोई चीज नहीं है जो उनको नहीं आता है. I don't remember that. Being it yeah, baking, be it making chocolates, being it the best chef ever, everything. everything, be it Yeah. stitching, be it making the house. Until date, she's like, after having so much of health challenges, she still remains to be up, must ekdam tayar. Okay, when I see her, no, so I mean, look at all the positive energy. Many people call me like, oh, you look like Shobha's daughter. I said, yeah. Even she Nice. feels, because the way I am, she says, actually, you have all the qualities. You are my daughter. I said, yeah, of course, I'm your daughter. Okay, so No, no, then, full of life. She's full of yeah, life. And from her only I've learned, how to balance things in life, whether it's home or your family, or, when I saw her behaving the way she behaved with all the adults or elders or guests, whoever came home, and the way she handled things, right from starters to main course to dessert, and just तरह से रखते थे सब कुछ, yeah, and talking, politeness, behavior, सब कुछ. I mean, she was strict with us, and she said, no, behavior is very important. आज वही सब चीजें काम आती है ना लाइफ में. Patience. yeah. See, I always believe one thing about life. See, money you can make, education you can get from outside, other things you will learn from the society by default. अब जैसे फॉर Yes, yes. एग्जाम्पल आप शॉर्ट्स पहनना या मिनी पहनना या सलवार कमीज पहनना या साड़ी पहनना, ये समाज आपको अपने आप ही सिखा देगा. लेकिन सिखा अगर आपकी देता है. कल्चरल वैल्यूज एक बार आपके संस्कार आपके बीच में बो दिएगा, फिर कोई इशू नहीं आता. दैट इज व्हाट माई फिर आप बिलीव. कहीं भी चलते हैं. हाँ, या आई कहीं भी बिलीव. चलेगा. Yeah, I feel the family values, the samskars is very important. एक बार ये आ गया हम्म. तो आप कहीं पे भी चले जाओ दुनिया के कोने में, तो doesn't matter, because I have seen many of your festive photos, like you all celebrate every festival very nicely, being abroad also. How is it like? So, as I said, my journey started in 2006 when I got married and I came to China. I stay in a city called Ningbo. It's a beautiful city near Shanghai. जब मैं आई थी यहाँ पर तब तो हार्डली कुछ था, मे बी एक जगह घूमने के लिए इंडियंस भी बहुत कम थे और हम जानते नहीं थे ज्यादा किसी को. तो एंड मेरे हस्बैंड का ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा था. So of course, in an alien country, there were a lot of challenges. One, I'd never been away from my parents, so that was one thing, that separation issue which I had to handle. Secondly, I had language barrier, which was one of the biggest barrier, because आप हिंदी इंग्लिश सब जगह बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब मैं आई उन दिनों में, अब तो काफी लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उन दिनों में खाली मैंड्रिन था, खाली चाइनीज. तो और मुझे लैंग्वेज आती नहीं थी इतनी, तो वो सीखना. बट आई थिंक इन ऑल द चैलेंजेस दैट आई हैव सीन, वन थिंग आई हैव लर्नड, एंड ऑफ कोर्स आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड. मुझे लगता है कि कोई भी आपके लिए एक स्पिरिचुअल पाथ होना बहुत जरूरी है, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी हो. देयर इज समथिंग विच टेल्स यू दैट नो, आप एक विक्टिम की तरह नहीं रह सकते हो अपनी जिंदगी में. कहाँ आ गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. यू जस्ट सल्क, so it's important to get out of that zone, that victim zone, and fight, take action. And that's where my journey really began of finding something within me. So during courtship days, जब मैं घबरा रही थी कि मैं चाइना कैसे रहूंगी, क्या है, तो my husband had told me one thing, that you come with an open mind. आप इंडिया में रह चुके हो, इंडिया के कल्चर को जानते हो, रहन सहन को जानते हो, खाने पीने को जानते हो. यहाँ पे सब अलग है. Yes, they are different, people are different, they look different, their language is different, their dressing is different, food is different, weather is different, सब कुछ different है. But
आप एक लर्निंग और एक सीकिंग माइंडसेट के साथ आओ. आई एम लर्निंग अ न्यू कल्चर. आई एम हियर टू गिव. आई एम हियर. आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया. ऑनेस्टली, मेरे को Wow. किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन मुझे खुद को लगता है कि आई रिप्रेजेंट इंडिया. आज जब मैं स्कूल जाती हूँ, या जो जो मुझसे मिलते हैं, जो चाइनीज फ्रेंड्स हैं, वो लोग, काफी लोग इंडिया नहीं आए हैं, लेकिन वो मुझे देखते हैं और कहते हैं, ओ, इंडिया इज लाइक हाउ आशी बिहेव्स, सो इंडियंस आर लाइक दिस. तो अगर मैं रूडली बिहेव करती हूँ उनके हिसाब से, उनका सारे इंडियंस वैसे होते हैं. अगर मैं हेल्पफुल हूँ तो यस, इंडियंस आर वेरी हेल्पफुल. सो यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, एंड विद दैट, keeping that thing in mind, things became very easy for me. Honestly, I met a lot of good people. I met a lot of good friends, colleagues. हमारे पास जो हाउस हेल्प थी यहाँ पर, हम यहाँ पे इंडिया इंडिया में जैसे आप मेड कहते हो, यहाँ पे आई कहते हैं, और Okay. महाराष्ट्र में आई मीन्स मॉम. सो Hmm. आई यूज टू, व्हेनेवर आई यूज टू कॉल हर आई, मुझे तो वो मॉम वाली फीलिंग आती थी. एजेड थी, एंड मुझे मुझे कई बार डांट भी देती थी, अरे जैकेट पहन के जाओ, बिकॉज बॉम्बे का वेदर हमेशा एक जैसा होता था, और यहाँ पे बहुत ठंड. तो वो वेदर के साथ भी और उस टाइम पे वो वेदर एप्स नहीं थे जो मुझे पता चले कि आज वेदर गर्म है या ठंडा है. तो वो रेडियो पे सुनती थी, मुझे बताती थी, आज 2 जैकेट पहन के जाना, आज ज्यादा ठंड है, आज बारिश होने वाली है. सो जस्ट लाइक अ मदर, शी गेव मी दैट लव एंड केयर. And gradually I started meeting a lot of people who were very appreciative, who were very loving, who were always sharing. तो लगा नहीं धीरे धीरे कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ. फिर तो ऑफकोर्स आपका फ्रेंड सर्कल बन जाता है, सब बन जाता है. और जो आप इवेंट्स की बात कर रहे हैं, इवन हमारे स्कूल में, इट्स एन इंटरनेशनल आईबी स्कूल, जहाँ पे खाली चाइनीज स्टूडेंट्स नहीं हैं, बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं. तो मुझे एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लाइफ का मिला यहाँ पर आकर, वेयर ऑल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, इवन दिवाली. तो मेरे को याद है, हम हर हर इवेंट की कमिटी बनती थी. एंड सो सपोज अगर क्रिसमस है, तो सारे क्रिस्टियंस वुड जॉइन टुगेदर एंड हैव an event for that. So all Indian teachers would join together and have an event on दिवाली. पूरा स्कूल दियों से लिट होता है. Wow. रंगोली कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो सब क्लासरूम्स के बाहर देवर रंगोली, सब क्लासरूम्स के बाहर देवर कैंडल्स. सब ने इंडियन कपड़े पहने हैं. हम अपने कपड़े लेके जाते थे, टीचर्स के साथ शेयर करते थे, दैट यू ऑल आल्सो वेयर. प्लस वी हैव दिवाली बॉल्स ओवर हियर, व्हिच इज लाइक अ वेडिंग इवेंट. हम लोग मिलकर प्लान करते हैं, वी राइट स्क्रिप्ट्स, वी हैव choreographers, we have kids who dance. हम सब participate करते हैं, even we ladies participate. Guys are behind the scene, hotel arrange करना, ये करना है, खाना अरेंज करना है. एक जैसे शादी होती है ना घर में, हर एक जन फैमिली मेंबर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो हमारे लिए दिवाली होती है यहाँ पर. मच मोर देन जस्ट वन डे, इट्स अ मंथ ऑफ प्रेपरेशन एंड हार्ड वर्क. So we really look forward to all the Indian events. It may be नवरात्रे और अष्टमी और एनीथिंग. अब होली सेलिब्रेशन होने वाली है. So I guess when you see all the foreigners, Chinese, everybody joining your event, कि उस वक्त आप लगता नहीं कि ये इंडियन है, ये चाइनीज है, ये अमेरिकन है, या कोई, सब एक लगते हैं, सब एक साथ एंजॉय कर रहे हैं. एंड दैट्स समथिंग आई which makes this place very special for me. Of course, India is my heart, लेकिन यहाँ पर रहकर वो कल्चर को अलाइव रखना is a very big thing. Right. No, I totally agree because I was also lastly in a place called Africa. So you can Hmm. imagine, ऐसा नहीं कि वहां पर Indians नहीं थे, लेकिन जहाँ मैं रहती थी ना, I was like, you can say in the outskirts of the place, Hmm. whereas it was just 15 minutes drive, but then I always used to feel isolated. So for me, Hmm. I never used to get rangoli and diyas and all that very easily. I once made the rangoli with petals and leaves and flowers. Yes. Anything I Yes. got, Yes. I made rangoli out of it. And these Africans were like, "Wow, how do you do all that?" I said, "It's in our blood. We Indians are made like that. जुगाड़ करते रहो life में." Yeah. So हमारी that's क्लास how में the vibe. लेगो टॉयज से रंगोली बनाते थे. लेगो टॉयज अलग अलग हाँ हाँ कलर्स के, हाँ सो हाँ. इट्स रंगोली इज जस्ट अ पैटर्न, अ मैथमेटिकल पैटर्न. तो जिस Yeah. क्लास में जो रिसोर्सेज होते थे, उन सब से रंगोली बनाते थे. कभी लेगो टॉय से, कभी रेड येलो ग्रीन पेपर से मैच करके, या Yeah. कभी वो हुला हुप्स होते हैं, उससे रंगोली बनाते थे. डिफरेंट क्रिएटिव वेज. या आई थिंक ये सब हम लोग ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं अब्रॉड जाने के बाद. हमको हमारे कंट्री की वैल्यू ज्यादा पता चलती है. बिकॉज आई वाज इन ओमान ऑल्सो. इन ओमान आई रिमेम्बर द full building light used to be off on the Diwali day, and everybody has to contribute for candles or diyas or whatever.
पूरा फ्लोर रंगोली और दियो से ही चले. It used to be Wow. mesmerizing. Awesome look. Beautiful. Matlab, I mean, I miss Yes. that. Yes. It is Yes. it Yes. is Yes. fun. I mean, keeping your culture, keeping your Culture, values alive abroad is a very different and very, very it's true. a treasurable experience. True. True. Very true. Very true. So my daughter Yeah. remembers everything. Mama, you used to do that. और मैं आज भी सारा, जबकि मैं इंडिया में हूँ जहाँ पर मिठाइयाँ इजीली मिलती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ घर पे बनाऊँ. So at least she Mm. knows कि ये हमारे कल्चर के वैल्यूज है, हमको ऐसा बनाना पड़ता है. Correct. I try to celebrate Correct. also. Only then she will learn, right? And Yeah. Very. how are the kids with you? How do they? Because you're very loving and caring and very fun living with children. That is what I've seen you. I'm sure you would be the favorite teacher of theirs. नहीं, फेवरेट का तो पता नहीं, बट आई एंजॉय बीइंग विद देम. एंड आई थिंक द ओनली रीजन आई हैव बिन अ टीचर फॉर सो लॉन्ग इज कि आप जब क्लासरूम में जाते हो, स्पेशली द एज ग्रुप दैट आई टीच, 5 to 6 years old, उनका आप जैसे ही जाओ, इवन आपका मूड खराब होगा, वो लोग आके सुबह सुबह आपको हग करेंगे, तो आपका मूड अपने आप ठीक हो जाता है, यू नो. Right. एंड there's so much of love and care, and even the parents, I would say, a lot of appreciation. Even जब साल शुरू में, I'll be very honest, थोड़ा थोड़ा, because मेरे प्रोफेशन, my profession is more about English speaking, so the parents prefer a native English speaker like Britisher or an American or Canadian. तो अगर एशियन टीचर है तो शुरुआत में थोड़ा घबराते थे कि यू नो उसका एक्सेंट कैसा होगा. बट जब साल खत्म होता है तो बाप रे, जो वो लव एंड रिस्पेक्ट, एवरीथिंग दैट आई गेट, आई फील माय वर्क हैज स्पोकन फॉर मी. इट्स नॉट द कंट्री और द जेंडर, माय वर्क हैज स्पोकन. एंड अगर वो नाम थोड़ा बहुत कमाया है तो दैट इज बिकॉज ऑफ whatever I've learned in from my teachers in the past, and you know, all the family support, my surroundings, and that is the same love I'm trying to give to my students. So yes, students, बच्चे तो सेम होते हैं, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, या कहीं भी हो. मस्ती है, हंसी मजाक है, जोक्स हैं, लव है, सब कुछ है. लेकिन वो एक जो आई फील एक सैलरी से ज्यादा जो आपको रिवॉर्डिंग लगता है is when you see them growing, you know, really, from zero English to they are speaking full sentences, having a normal conversation with you, asking questions. Parents are appreciating, respect. Even इतने साल हो गए हैं तो भी जो बच्चों को मैंने समझो 10-11 साल पहले पढ़ाया था, वो लोग भी अभी आकर अगर यू नो एक रिस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग कहते हैं, याद करते हैं, पेरेंट्स टच में रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स वेरी नाइस. I know teaching is a very noble profession. I think we should be paid the True. highest. I actually left it, but I am still in touch with. There are some parents. I mean, I taught for a very short period when I was in Devlali, and then I got married. So parents still now when I go to Devlali, they see me in the market, ma'am, please rejoin. I said no, now I cannot because I have my own kid to look after. So You have a this full-time school now with her. full time school, yeah, 24 hours I'm learning from her actually rather than teaching her. So Yeah. you were talking about spirituality. You were talking about something which keeps you connected and motivated. What is that? Would you like to share with us? Yeah, so I got connected to Buddhism after marriage. जब ये challenges थे life में, where you know, कहीं ना कहीं आप अपने family को miss कर रहे हो, language नहीं आ रही, वो जो victim feeling शुरू शुरू में आने लग गई थी, तो उसको overcome करने के लिए I think I needed a spiritual path. My husband was into Buddhism, and ग्रेजुअली आई ज्वाइन, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था इसके बारे में. देन आई स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड टू लीडर्स इन इंडिया, एंड यू नो, देयर वर लीडर्स इन हांगकांग और वेरियस अदर प्लेसेस, एंड बुक्स पढ़े हमने साथ में, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे यहाँ पर, हमने साथ में मिलकर स्टडी किया. Few basic things which even now after so many years of being in Buddhism that I believe is that life is all about human revolution. आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे, फाइनेंस इश्यूज आएंगे, रिलेशनशिप, यू नो, दीज आर ऑल कर्मास दैट योर, मे बी आपके पास्ट लाइफ से आप बॉर्न हुए हो उसके साथ. इट कुड बी अ हेल्थ कर्मा, रिलेशनशिप कर्मा, फाइनेंस कर्मा. और अगर आपने उसको इस लाइफ में नहीं ओवरकम किया, इट गेट्स कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लाइफ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव, फॉरगेट,
move on, not carry the baggage of what you're going through, for years together, and how you come out of it beautifully, and how you become an inspiration for others through your own human revolution. मैं चाहकर भी किसी और को नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन अपने आप को बदल सकती हूँ. That's more easier. So through my human revolution, how I become an inspiration for others, that is what I learned in this journey. And I I feel that, मेरे लिए अब life is more about a contributive life. मैं क्या दे सकती हूँ rather than just thinking about मेरे को क्या चाहिए. तो मुझे मेरे किसी ने कहा था कि आपके मैंने कुछ तो बात थी, उन्होंने मुझे पूछा दैट कि आपको नहीं अच्छा लगता कि कोई अप्रिशिएट करे या जो भी है. अप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं अच्छा लगता है. लेकिन आज जैसे अभी मेरे स्कूल में टीचर्स हैं, आई वुड पुश देम कि उनका नाम हो, उनको आगे करके करूं. तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि आपका प्लेट जब में बहुत सारा खाना है, आपका अगर पेट भरा हुआ है ना, तो आपकी फेवरेट चीज भी आपको नहीं अच्छी लगेगी कि मेरा पेट भर गया है. So I guess in life I've got a lot of love and respect. I wouldn't say पेट भर गया love and respect से, लेकिन I want to encourage someone else. I want someone else to grow. So I guess मेरे लिए अब वो ज्यादा important हो गया, चाहे वो students हो, colleagues हो, friends हो, मैं कैसे उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ा सकती हूँ. And that can only happen through being an inspiration for everyone. So that is the kind of contributive life I aim for now. I have also जीजू ने मेरे साथ भी शेयर किया Yes. था. इवन आई वाज प्रैक्टिसिंग इट फॉर शॉर्ट टर्म एक्चुअली. एंड Yes, सी I've seen it. it's all about, I used to go for meetings and all, but I don't know, see, there's a connection you made for some special connection. And but now I'm too connected to Lord Krishna. I read Yeah. Bhagavad Gita, I read Srimad Bhagavatam, and I do chanting. I am so deeply connected. What all you said about karmas, it really plays. And Mm, because I'm also a healer, so this karma, the mm, self acceptance, my husband often uses a statement, victim of victims. Actually, what happens? We live in the life of victim of victims. Like for example, God forbid if I have been treated, not treated well by my in-laws. mm, So एक वो mm. नेचुरल एक पैटर्न आ जाता है कि आपकी बहू आएगी तो आप भी उसको अननोइंगली वैसे ट्रीट करते हो. तो ये मुझे हमेशा Mm, बोलता है कि आप है ना हर रिलेशनशिप में विक्टिम ऑफ विक्टिम्स करते हो, जो मैंने रियलाइज किया है. सो इन mhm, हीलिंग वर्ल्ड व्हाट आई लर्नड इज you cannot change other, like you said. The same Buddhism ka part, we also learn the same. The Bhagavad Gita says the same. हम लोग को सिर्फ, हम इधर किसी को चेंज करने के लिए नहीं बैठे, हम खुद के ऊपर काम कर लेना तो जिंदगी उसमें ही बहुत. पूरी भर जाएगी. इट इज नॉट सो इजी. हाँ, You have to be that, right. you have to forgive. First of all, I believe you have to work on yourself. जब तक आप खुद के इसमें क्लैरिटी पे नहीं हो ना, आप दूसरे से उम्मीद भी मत करो. और पहली बात तो चेंजेस होगा नहीं. इफ आई एम अ नेगेटिव पर्सन, आई विल श्योरली गिव यू द नेगेटिव वाइब्स. I mean, Mm, we've hardly met, I think, for years, but that bonding is mm. still there. You don't Still need there. to True. be, you don't have to be physically present for having the love or the affection. एक तो पहले से ही True. ब्लड है, ठीक है, हाँ. फैमिली रिलेटेड है, फैमिली रूटेड है. Mm, आप चाहे फैमिली mm, रूटेड नहीं हो, बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल, दे आर लाइक, आई डोंट नो, गॉड इज मेड मी सच कि दे आर लाइक, यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन. आई सेड सी, आई डोंट डू एनीथिंग, आई हैव अ वेरी सिंपल फंड ऑफ लाइफ. मेरे से अच्छा नहीं होगा ना, कम से कम मैं बुरा नहीं करने की कोशिश करती हूँ. आई ट्राई. right. आई वॉन्ट से दैट आई एम 100% परफेक्ट, बट मेरी प्रैक्टिस यही रहती है, आप अच्छा बेशक मत कीजिए, Mm, वो आपकी चॉइस है, लेकिन कम से कम बुरा मत कीजिए. the least you can do is that, mm, mm, right? Because what mm, happens, mm, for example, अब अगर मैंने आपके बारे में सोचा, आशी is this, आशी is that, for example, so what happens, mm, even if I'm not telling you, the vibration will automatically go there. You will sense it. And especially people mm, who mm. are somewhere related to the spiritual path, वो automatically vibrations आ जाती है. तो इसके हाँ, हाँ. लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मस्त रहो, जैसे चाहिए आप, जिनको चाहिए, कोई एक पाथ स्पिरिचुअल का जरूर पकड़ो. बिकॉज विदाउट गॉड Yes, वी आर नथिंग. We are the true existence of God only, because without Him we cannot even take a breath. We can make money, we can true. take charge of relationships, we can make a house, etc. etc. लेकिन उनके ब्लेसिंग के बिना हमारा तो एक ब्रेथ भी नहीं चलता. ब्रेथ गया तो Good. लाइफ फिनिश्ड, राइट? So this is very important. And I Very think nice.
जैसे देखो कहीं पे लोग बोलते हैं Yeah. गुरु चाहिए, जैसे कोई स्पिरिचुअल पाथ चाहिए, कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, राइट? So how do you like now after so many years? How many years have you been there now? Mm-hmm. How many years have you 18 been? years. 18 years 18. in China. Okay, okay. 18, And 18. Yeah. how But often do I you come to India travel? like twice a year. Sorry? Twice a year I do come to India. Okay, okay, okay. So the holiday is for a short time or a long time? Short holiday or long holidays? So is both I get. So winter holidays is short, so I just come for 2 weeks to, you know, less than a month, around 2 weeks, a little more than 2 weeks. And summer holidays I'm there for a little more than a month. Okay, okay. Okay, so what else would you like to share with our viewers? I think if I have to give a message to young girls who are planning to get married, and because ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, of course वो तो आपका डेस्टिनी है कि आप कहाँ जाते हो क्या करते हो, लेकिन जैसे मैं घबराती थी कि मुझे बॉम्बे से बाहर नहीं जाना, जहाँ मैं रहती हूँ वहां से बाहर नहीं जाना, बहुत बहुत होता था। लेकिन आई थिंक जस्ट जहां भी जाओ एक्सेप्ट ईच प्लेस एज योर ओन। एंड मैं सच बताऊं, जब तक मैंने चाइना को होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं यहाँ ग्रो नहीं हो रही थी। मेरे को जॉब्स आते थे जाते थे आते थे जाते थे, मुझे लगता था कि आज ना कल मैं शायद इंडिया चली जाऊंगी। लेकिन जिस दिन मैंने ठाना दैट नो, दिस इज माई हाउस, दिस इज वेयर आई बिलोंग, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू स्टे, things started changing for me, you know, and then my job became permanent, and we started finding good friends, everything started flowing. So I guess आपको भी वो वाइब्स देना है, तो जैसे लोगों के वाइब्स होते हैं, जगह के भी वाइब्स होते हैं, तो आप क्या जगह को वाइब्स दे रहे हो? सो वेर एवर यू गो विद एन ओपन माइंड, ओपन हार्ट, पीपल विल ऑल्सो वेलकम यू, एंड डिपेंड्स ऑन हाउ मच लव यू आर गिविंग देम, दैट लव विल come back. You know, they say that just one individual is more than enough to like enlighten the entire atmosphere. So you be that one person, you know. And regarding work, I feel um, जब बहुत काम होता है, because you know work and house balance करना है, luckily I have someone to help me at home with cooking and stuff, but still there are a lot of things at work, इतना ज़्यादा work pressure हो जाता है, and to come back home with that work pressure, or to you know, a lot of women I'm sure, you know, handling both home and work is not easy task. और जिस दिन मेरे पास बहुत ज्यादा होता है, तो मैं जब गाड़ी चला रही हूँ तो मैं वो भजन सुनती हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, एंड रियली आई डोंट नो हाउ माय वर्क गेट्स फिनिश्ड, सब हो जाता है, लाइक वाओ इतना सारा था, टंग 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 सब हो गया। तो आई थिंक दैट हेल्प्स। सो बी स्पिरिचुअल, बी कनेक्टेड, बी योरसेल्फ, बी हैप्पी, दैट्स what's most Yeah, important. before I forget, I remember you sing amazing, right? Do you still sing bhajans and all? वायलिन यहाँ पे कुछ होता है अष्टमी या कुछ माता की चौकी या क्या थोड़ा बहुत, लेकिन जो मैं डेली बेसिस पे करती थी वो बहुत कम, बट आई लिसन आई बिकम वो सीकिंग, चाहे ऑल्दो आई एम इन बुद्धिज्म, मैं सब कुछ सुनती हूँ, चाहे जो भी जहां से भी आपको लाइफ के बारे में नॉलेज मिल रहा है, चाहे वो भजन हो या कोई भी फॉर्म में हो, कृष्णा का हो या कोई भी हो, आई एम रेडी, बस एक एब्जॉर्ब करती रहती हूँ सारा दिन। आई थिंक सो दैट्स, यस आई ट्राई टू sing that small line for you since you can hear me and I cannot. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दिस भजन एक्चुअली मेक्स मी अ वेरी नोबल पर्सन। मुझे लगता है एक तो काम भी हो जाता है, और वो अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, मतलब उनकी कृपा से हो रहा है, सो ही इज डूइंग एवरीथिंग, सो आई आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट दैट आई डिड इट। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो जो एक
फीलिंग आती है ना कि नहीं मैंने किया, वो नहीं आता बिकॉज आई हियर इट सो मच. सो आई गेस फॉर एवरी पर्सन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड टू अ स्पिरिचुअल पाथ. Thank you, Chanda, for inviting me. And I have to tell viewers that Chanda herself is very inspirational. उसकी खुद की journey भी बहुत एक inspiration. I mean, एक book लिख सकते हैं हम चंदा की life पे. And in spite of various health obstacles herself, she has been so positive. और ये शो के लिए ऐसा शो शुरू करना जहां आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हो और बहुत सारे लोगों के लाइव्स में मोटिवेशन पहुंचा रहे हो is itself a noble thing to do. So wish you all the very best, Chanda, in your life. And I just want to read out something for you. Life is an echo. What you send out comes back. What you sow, you reap. What you give, you get. What you see in others exists in you. Do not judge, so you will not be judged. Radiate and give love, and love comes back to you. Thank you. Hare Krishna. Thank you.